Next is air pollution. एयर पोल्यूशन क्या है, सबको पता है बेटा? द कंटामिनेशन ऑफ एयर with the impurities like smoke, dust, harmful gases is known as air pollution. So there are various factors जिसका इन्फ्लुएंस पड़ा है एयर में, and we can see in different form. First is acid rain. Fossil fuels like coal and petroleum जो होते हैं बेटा, when burned releases fossil fuel like coal and petroleum when burnt releases small amounts of nitrogen and sulfur. And hence releases SO2, NO2. When these are mixed in with rainwater, acid rain is formed. कैसे? जैसे कि SO2 है, वो H2O जो रेन वाटर होता है उसके साथ मिक्स करता है और बनाएगा सल्फ्यूरस एसिड. ऐसे ही NO2 plus H2O give rise to HNO3, nitric acid. Here CO2 plus H2O forms carbonic acid. This leads to acid, that is acid rain is harmful for crops, aquatic life, etc. Second factor how the air pollution is caused is when fossil fuels are burnt, there are unburnt carbon particles called hydrocarbons. When they are present in large amount, they reduces the, क्या करेंगे, ये पार्टिकल जो अब चल रहा है, जो आजकल चल रहा है, आजकल क्या चल रहा है, रोज न्यूज़पेपर में आप लोग क्या पढ़ते हो,
पॉल्यूशन और फॉगी फॉगी रहता है, तो वो यही स्मोक ही है जो लो टेम्परेचर में जो है वो एक फॉगी सा क्रिएट करता है। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये इतने ज़्यादा हमारे ब्रीदिंग सिस्टम को जो है इफ़ेक्ट करते हैं। सो व्हेन दे आर प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट दे कॉजेस विजिबिलिटी कम कर देते हैं, लो दिस combination of smoke and fog is called smoke. Clear? The third one is ये जो स्मोक है जो आजकल चल रहा है ये फॉग नहीं है, ये स्मोक है। ठीक है, नेक्स्ट the air pollution causes various respiratory disorders. Regular breathing of the contaminated air will increase the cases of breathing problems, allergies, and cancer etc. So these are some of the factors जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन जो है वो हमें इफ़ेक्ट कर रहा है. So there is a form exists called lichens. Lichens are a form of life forms which exist, ठीक है, on the bark of tree ठीक है, and rocks, but it is commonly found in, कहाँ पाई जाता है lichens? Commonly found in hilly areas where there is less pollution, जहाँ पर less pollution होता है. As lichens are sensitive towards SO2. So SO2 is sulfur dioxide. So cities में नहीं मिलेंगे ये. They are not found in cities like Delhi, Bombay, metropolitan cities. Clear? Found on Earth's surface is available in the form of seas and oceans, which is saline. ठीक है, ये तो saline water है, ये किसी काम का नहीं है, हमारा खारा पानी है. Only fresh water is found in rivers, lakes, ponds and जो हमारे पोलर रीजन्स हैं in the form of snow.
वाई वाटर, अब नाउ द क्वेश्चन इज दैट ऑफ कोर्स एक तो पहली बात कि वाटर को हमें जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए. नाउ द क्वेश्चन इज वाई वाटर इज़ नेसेसरी. वाटर नेसेसरी क्यों है, या हम कह सकते हैं और वाई डू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फ्रेश वाटर नॉट सलाइन. क्यों चाहिए? तो फर्स्ट इज all cellular processes take place in a watery medium. ठीक है, जो भी सेलुलर प्रोसेसेस होते हैं वो सिर्फ वाटरी मीडियम में होते हैं. सेकेंड इज substances are one part of the body to the other in a dissolved form. Third is terrestrial life forms require fresh water, so terrestrial life forms require fresh water to get rid of high amounts of salt. ठीक है, salt from their body में से जो टॉक्सिक वेस्ट होता है तो दैट इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. सो फॉर दैट फ्रेश वाटर इज रिक्वायर्ड. ठीक है, क्लियर? इज इट क्लियर? they cannot get rid in saline water. खारे पानी से सॉल्ट्स वेस्ट नहीं होते. नेक्स्ट इज दे रिक्वायर फ्रेश वाटर. मतलब फ्रेश वाटर मीन्स मीठा पानी, जिसे हम कहते हैं नॉट सॉल्टी, टू मेंटेन. क्या करते हैं? बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स को मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी? कोई बच्चा बताएगा क्या मीनिंग है बायोडाइवर्सिटी का? हाँ जी, वेरियस फॉर्म्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना. तो इट मीन्स दैट, इसका मतलब क्या है? दैट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जहाँ पर भाई पानी नहीं है तो ऑफकोर्स वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी नहीं मिलेगी. सो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर डिसाइड्स, बेटा माइक ऑफ करो, डिसाइड्स द नंबर ऑफ individuals of species, also the various forms of life. कौन कौन सी फॉर्म्स ऑफ लाइफ वहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे ये भी डिसाइड करता है इन दैट पर्टिकुलर एरिया.
other than water, the other factors are temperature and soil. वाटर, टेम्परेचर, सॉइल, ये चीज़ें मिलकर किसी एरिया में बताती हैं कि किस तरह की लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करेगी और कितने नंबर में एग्जिस्ट करेगी, ज़्यादा में या कम में। क्लियर। नेक्स्ट इज़ वाटर पोल्यूशन। जैसे हमने एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा, ऐसे वाटर पोल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे। वाटर पोल्यूशन जैसे एयर में अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस ऐड करना, ऐसे ही द एडिशन ऑफ impurities in water to make it unfit for use for any kind of consumption। किसी भी तरह के कंजम्पशन के लिए उसको अनफिट बनाना, उससे हम बोलते हैं that the water is polluted and the process is, and that phenomena is called water pollution। So the various methods, कौन कौन से various methods हैं जिससे वाटर जो है वो पोल्यूट हो रहा है, हेडिंग वाइज आता है। फर्स्ट इज द एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस टू वाटर बॉडीज। हम कुछ ऐसे अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस डाल रहे हैं जिससे कि वो अनफिट हो रहा है। एग्जाम्पल लाइक एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स and mercury salts, which are very poisonous। These all are undesirable substances। Second is the removal of desirable substances, like dissolved oxygen is used by the animals and plants for survival। ठीक है। अगर कोई भी ऐसा चेंज, एनी चेंज दैट reduces the dissolved oxygen will affect aquatic organisms। Clear everyone? तो ना तो हम अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस ऐड करें, ना कुछ डिज़ायरेबल सब्सटेंसेस हम रिमूव करें। थर्ड इज अ चेंज इन टेम्परेचर। अब फैक्ट्रीज वगैरह अगर हॉट वाटर, गर्म पानी रिलीज़ कर देंगी तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। सो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स आर used to a certain temperature range for survival। So a sudden change in temperature will affect their breeding। Clear everyone?